So, hello everyone. Today we are going to see how to create rating system in HTML and CSS. So here I have one page where you can show the ratings visible here. So we are going to create this component in HTML and CSS. How to create this starts with CSS only, and how we can add the rating in this and show this half star as well. So चलिए शुरू करते हैं. तो यहाँ पे मैं एक एचटीएमएल ले रहा हूँ रेटिंग सिस्टम का एचटीएमएल. यहाँ पे एक एचटीएमएल क्रिएट करते हैं. Now here we are taking and to the class name rating and everything we are going to do in this container. And for showing star, we want to add the dynamic stars. So let's say we have span. Let's take for the 5 stars. We have the 5 stars, and let's have the CSS here. And we can add the star with the span with the clip path. We will use clip path to create the star. So for the span, we have the 5 span. And if we open with the live server, the live server is closed. Let's reopen this on the live server. Now if we see, we want to do this height 50 pixel and width 50 pixel. Let's clear the background gray. Start coming because we have given an height and width, but we have to make a display in a block as it is a line element. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा कंटेनर आ गया है रेटिंग का. अब क्या करते हैं, हम इसमें स्टार बनाते हैं. वो हम स्टोरी का करेंगे तो स्पैन स्पैन के बिफोर से हम स्टार क्रिएट करेंगे कंटेन. This height will be 35 pixel website. Height and width will be 35 pixel. And let's keep its background as green. Okay, here we have to make it display inline block as well. Display inline block. And we have to make it with absolute as well to make it in center, or we can use display flex justify the term center and alignment term center. Okay, here I have to make it inline flex. So now we can see the star container is center, and now we have to clip this green background into the star. So here we will go to the clip bar generator. Here you can get the star. You just copy this clip path. If you get here, you can see for the star here. So a star is ready. Now we have to count. Now we have to add these stars based on the functions. We have to add a rating dynamically. Like we want to pass the rating, gain rating and total rating, and based on that it will show the UI on the front end. So अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं to make it dynamic. We let's say writing a script here, and here let's make HTML. Select the HTML document.page selectors,
dot rating, where so we const. Now here I will add this span with script based on dynamic values. For that, let's make a function const so rating. And here I will pass the rating argument rating and I'll pass a parameter of the rating and total rating. Okay. And based on that, let's say if we have passed total star 5, then I will have to create a 5 star in the content. Okay. So for that, what I will do, I will just instead of for loop, I'm just using array and pass the total here, and it will create the 5 blank arrays. So we can map or use for each, and I'm using map here for the star here. And what I will do, star or just doing the rating container. So for the rating container dot HTML is equal to plus is equal to, we pass the first format it and format कर दिया. अब तो यहाँ पे इनपुट स्पैन पास करना है, स्पैन ऐड कराना है. जितने भी हमारे स्पैन टोटल इवेंट पास करेंगे, जितने भी हम यहाँ पे टोटल पास करेंगे, उनको मैप के द्वारा हम यहाँ पे उतने स्पैन इतने स्टार क्रिएट कर रहे हैं. इसको क्लास में स्टार दे देंगे, स्टार. Now if you see here, but now let's call this function so rating. I'm passing rating is 2 and total rating 5, and pick 5 from here, go to the total 5, and we create the 5 array of length 5, and based on that it will just create the 5 element. It's formatted today. And let's wrap this text so that you can see the changes. Now every text is visible to you. And now if you see here, we have the 5 star already created. Okay. And now if I'm passing 10 here, the 10 star will be created. Okay. Or if I'm passing 100, the 100 star will be created, right? But for now I'm on just 5. Now what I have to do, based on the active rating, I have to show the active rating as well. For that, what I will do, I will add active class on the last rating. Let's say we have, अगर हमारे पास जो है रेटिंग की वैल्यू अगर 4 है, तो हमको इस 4th स्टार पे हमको एक्टिव क्लास लगाना है. एक्टिव क्लास के पहले जितने भी स्टार हैं उनको हम ग्रीन करते हैं, तो बाकी को ग्रे कर देंगे. तो इससे ये लगेगा कि यहाँ पे 4 स्टार एक्टिव है और ये डिसेबल है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको रेटिंग मिल रही है, तो हम क्या करेंगे कि रेटिंग कंटेनर डॉट चिल्ड्रेन, रेटिंग कंटेनर के अंदर हमारा जो है जितने भी चिल्ड्रेन रहेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट हम वो स्टार एलिमेंट गेट कर लेंगे. यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रेटिंग -1 करेंगे, क्योंकि ये जो रेटिंग कंटेनर के जो चिल्ड्रन है वो हमारा 0 से स्टार्ट होगा. 0 1 2 3 4 एंड 5 4 तक जाएगा. 0 1 2 3 एंड 4. तो यहाँ पे हमको 1 माइनस करना पड़ेगा ताकि वो गेट कर पाए वहां से. अब यहाँ पे इनपुट कर देंगे क्लास से स्टार्ट वेट, यहाँ पे हमको एक्टिव क्लास सेट कर देंगे. अब हम देखिएगा
हमारा यहाँ पे हमने 2 पास किया है, यहाँ पे हमने 2 पास किया है, तो ये दूसरे एलिमेंट पे एक्टिव क्लास सेट हो रहा है। अब अगर हम यहीं 3 पास करें, तो स्टार की रेटिंग की वैल्यू 3 पास करें, तो ये क्या करेगा, यहाँ भी 3 आएगा, और ये 3 - 1 सेकेंड, यानी कि 0.2 थर्ड एलिमेंट को एक्टिव क्लास सेट कर देगा, यानी कि 0, ये 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2, सो ये थर्ड एलिमेंट पे एक्टिव क्लास कर देगा। अब हमको करना क्या है, जो एक्टिव से पहले जितने भी स्टार हैं उनको ग्रीन रहने देना है, और बाकी वाले को व्हाइट कलर कर देना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्पैन डॉट एक्टिव, स्पैन एक्टिव के बाद जितने भी स्टार हैं, ठीक, जितने भी स्पैन है उनको हम क्या कर देंगे, कि बैकग्राउंड एज ऑफ, ओके। स्पैन डॉट एक्टिव, ओके, एक्टिव, एक्टिव पे फिर हमको एक्टिव के बाद जितने भी स्टार हैं वहाँ पे आना चाहिए, बट ये अप्लाई नहीं हो रहा, ओके, ओके। तो हमको यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली हमको यहाँ पे बैकग्राउंड जो है इसका ग्रीन रहना चाहिए, यहाँ पर उसको हमको स्टार को वाइट करना है, राइट, और ये बाकी हमारा डिसेबल रहेगा। और हम क्या करेंगे कि मार्जिन टाइट कर देंगे 3 पिक्सल, सो दैट ये थोड़ा सेपरेट है, और यहाँ पे फोन की बजाय हम ट्रिपल डी थोड़ा और डार्क करेंगे इसको, फॉर दैट this triple D, then we can see the decibel star here, and here if I call show rating, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 4 पास करूँ, अरे ये, okay, one more thing, because it is appended here, so if I am calling again, it is appending again and again. So before calling this function, I have to make this inner child as blank, okay. Now if you see, if I am calling this, it will, the active rating is 4 and total rating is 5. If I call this, the active, this is about the 4 and total rating is 5. If I pass the total rating is 10 and the rating gained is 7, then we can see the 7 star are active and 3 star are disabled. Now let's say we want to implement if there is off rating, like 7.5 or 5.5. So let's see how to do that. Here I will check if, अब यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा कि इफ रेटिंग इज ग्रेटर होते हैं, अगर रेटिंग जो है यहाँ पे आप 2 तरीके से चेक कर सकते हो। अगर हम पार्स इंट के, अगर हम इसको पार्स इंट में पास करें, ठीक है, पार्स इंट में पास करें रेटिंग को, तो अगर ये रेटिंग 3.5 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, और ये 3.5, तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि
इसमें मतलब हमको क्या करना है कि उसकी नेक्स्ट वाले स्टार में हमको हाफ क्लास सेट करनी है, एंड बेस्ड ऑन द हाफ क्लास आई विल जस्ट कलर द हाफ स्टार विद CSS। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे आपको चेक करना है, ठीक है। अगर अगर रेटिंग हाफ में हुई तो हमको हाफ वाली क्लास लगानी है, अदरवाइज एक्टिव क्लास लगानी है, राइट। हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो है दो क्लासेस लगेंगे, एक्टिव एंड हाफ। एक्टिव हमारा रहेगा प्लस हाफ क्लास भी यहाँ पे पास करनी है मुझे इस केस में। हाफ पार्शियल, you can add partial there. Okay, let's for now let's pass the half class on। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हाफ क्लास है तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि ठीक है, हमको पास सेम ही चीज करनी है, बट ये हाफ वाला जो CSS है वो हम हमारे नेक्स्ट एलिमेंट पे लगाएंगे उसको। ओके, and one more thing here, because if we pass 3.5 here, so if you pass 3.5, okay, so there you check, and if the rating is in decimal, then check on where the half class also. Let's pass 3.5 here now. And we should check here. Can you take out your fundamental process? What zero is happening here? Into, into. So what's not getting here? Let's get started. Check process with this. Mhm. Okay, here also the error is happening. तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, further use करने में इसका started, okay, not continuous first and 30% full check, okay, there's a different to that. Let's start with two. What the error is here. Let's console first whether the signal is getting or not. Okay, we are passing 3.5. Here I will have to parse them because they have to load in the pass because element cannot get where we are getting children, and 3.5 is not any element. So for that we have to pass this rating here under the parsing. Now we can wait. First is start wait. First is start wait. Two and off. Now fishing. We have half, active and half. Okay. We have passed. Okay. So fourth element, three element will be complete fully start, and the fourth element will be half because we have our rating 3.5. Now let's implement the half star here.
For that, what we will do, if okay, so if span dot active or span dot half, if there is half, then background will be linear gradient to right, green 50% will show half green, and rest will be this triple T. Okay. Okay, here I will have to pass 50% here also. Now if you can see, this is half. Okay. So what we have done here to color this background only 50%. What you have did, you can use you can make use of color stop in the linear gradient. Here, if you pass 70% here, you can increase and the background will be filled from to that. Okay. And based on that, we can show 3.2 or 3.1 and any point. You can implement anything, whether it's be zero point 0.1, 0.2, or 0.5 or zero point 0.7. Okay. So we have implemented the half star here. So we can see if we implement the 7 and 10, we have the 7-star color. Now if we pass 2.5 and total star is 5, then 2.5 star is colored here. Now if we pass 1.5, then we can see 1.5 star is continue. Now if we pass 4.5, we can see 4.5 is star is colored.